going to see adversarial search. So this type of search is ideally used in gaming applications. So now first of all, what are the characteristics of this search or how can we define this? So first characteristic है कि it is multi-agent. So here multiple agents can be present in same environment, and these agents can either be cooperative or competitive. So agent एक दूसरे के साथ भी वर्क कर सकते हैं and they can also work as an opponent of each other. And generally games में agents एक दूसरे के as a opponent ही वर्क करते हैं. अब जब agents एक दूसरे को compete करते हो, एक दूसरे के opponent हो, तो ऑब्वियसली एक एजेंट के लिए दूसरे एजेंट का मूव अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा. प्लस किसी भी पर्टिकुलर मूव को करने के लिए टाइम लिमिट्स भी गिवन होती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज अ गेम ट्री. सो दिस गेम ट्री इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ इनिशियल स्टेट एंड ऑल द लीगल मूव्स एसोसिएटेड विद इट. एंड जनरली इस टाइप के सर्च में ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर प्रूनिंग और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. So pruning means once we have predicted that a particular branch will not lead to a solution, then we are here just ignoring that branch. And the second one, heuristic functions, so we have already discussed about the same in previous videos. Now as a part of gaming, it can have 4 types of information: perfect, imperfect, deterministic or non-deterministic. So perfect information means each and every agent can see the complete board or examine the complete information regarding environment. So perfect information में agents एक दूसरे के moves भी देख सकते हैं. For example chess, जिसमें obviously हम opponent की चाल देख सकते हैं. Second one is imperfect information. So here agents are not able to see each other's moves. For example, battleship. Then comes deterministic information. So here कोई strict pattern या कोई strict rules follow होता ही है. For example, again chess, जहाँ किसी भी type की randomness होती ही नहीं. And the last type of information is non-deterministic. So here randomness follow होती है. For example, in Ludo King, rolling of a dice, then drawing a card from a pack of cards. So 52 cards के pack में से कौन सा card निकलेगा we cannot determine. So it is completely random. Now second thing, what can be the format of this type of games? So it can be turn taking, like first it's a turn of agent 1, then turn of agent 2 and so on. Then it can be zero sum, where both the agents are in a competitive environment. So here one agent will try to do something which makes the situation best, and at the same time the other agent will try to make it worse for agent 1. Then it can be constant sum. So constant sum में हर एक actions के लिए यूटिलिटी फंक्शन और वी कैन से कोस्ट ऑलरेडी असाइंड होता है. मतलब कि वो मूव किया, वो एक्शन की, तो स्कोर उतना ही होगा जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, न उससे ज्यादा न उससे कम. नाउ व्हाट कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्च, और वी कैन से हाउ कैन वी फॉर्मुलेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो इट स्टार्ट्स विथ इनिशियल स्टेट एज यूजुअल, देन इट कंटेन्स प्लेयर्स, then actions of all those players, then the results associated with those actions, then terminal test. So terminal test means to check whether it is the end of game or not. Then comes utility function. So these are nothing but these are the cost for each possible actions. Now this type of search has 2 types, minimax and alpha beta. Using both these algorithms we can do this adversarial search. Now first of all, what is minimax algorithm? So this algorithm is of recursive type.
मतलब this algorithm will follow backtracking. And secondly, this algorithm works on DFS, depth first search. So as I had mentioned in one of previous videos that why we have to use DFS and not BFS. BFS में breadth wise traverse होता है. So एक लेवल पर जितनी भी नोड्स प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी ट्रावर्स हो जाएगी. बट नो, इट्स नॉट द केस हियर. यहाँ तो एक एजेंट के मूव के बाद, किसी भी एक एजेंट की एक्शन के बाद इट विल बी टर्न फॉर द सेकेंड एजेंट. सो एक लेवल पर जितनी भी नोड्स हैं एजेंट उनमें से किसी भी एक पर ही जा सकता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर DFS. Now example of this algorithm is either chess or tic-tac-toe or Go, like, and similar two players game. Now we will see how actually this algorithm works. So here tree is given. This level is maximum, this level is minimum, then again maximum. So for selection the value for this node, what we have to do? This node is defined by maximum, so we have to select the maximum value from here. 1 or 2, which one is maximum? 2, so 2 will go to here. It will be 2. Now from -1 and -2, which one is larger? -1, so it will go here. Then again 2 and 3, so here it will be 3. -2 and -3, so it will be -2. Now for this level the values are decided with the help of minimum. So from these minimum value will go here, so here it will be -1 and here it will be -2. Now again this level is defined by maximum, so again maximum value will go here, so it will be -1. Now time complexity for this algorithm is big O b raised to m. So here b is the branching factor. Branching factor का मतलब है कि किसी भी नोड के चाइल्ड नोड्स कितने हैं और इन शॉर्ट किसी भी स्टेट से गिवन स्टेट से पॉसिबल मूव्स, पॉसिबल एक्शंस कितनी है, that is branching factor, where the agent can select only one of those. And this m is the maximum depth possible for any given tree, and space complexity for this algorithm is b into m, branching factor into given depth. So this was all about adversarial search and its first type, Minimax algorithm.